Acharya Shri Vijay Vallabh School, Pune brings to you a webinar on critical thinking in social studies. To learn and evaluate the things we study and hear around us, to evaluate the learning styles and recognize the areas of strength by our speaker Kalpita Kshirsagar. To come up with new or different solutions for a given problem, our chairman Shri Subhashji Parmar has inspired and guided us. To gather more information and recall to the existing knowledge, to deal effectively with social, scientific and practical problems, let's begin with our today's interesting webinar. A very happy morning to everyone. With warm greetings, I, Sonal Khabia, on behalf of Acharya Shri Vijay Vallabh School, feel highly privileged to welcome you all to Vijay Vallabh Sunday Hour. With the inspiration and guidance from our chairman, Sri Subhashji Parmar Sir, and members of the Education Committee have organized today a very fascinating Facebook Live webinar with our eminent speaker, educationalist, Ms. Kalpita Kshirsagar, on the topic Critical Thinking in Social Studies. Our vision is to empower the youth and bring all the stakeholders together on one platform to discuss and learn about various aspects. Education is not the learning of facts, but training the mind to think. Critical thinking is the ability to think logically, clearly, and independently, which develops our thinking process and makes more thoughtful. So, everyone, let's be ready and invest your quality time to gain more knowledge for our today's topic, critical thinking in social studies, which prepares students to grow up active, responsible, and reflective members of society, and develops historical thinking and literacy as a way of navigating our world. Now, I hand over to our respected principal, Mrs. Snehal Khataukar Madam, to brief us about our school. Over to you, ma'am. Thank you, Sonal. Good morning to one and all. It's a great pleasure to welcome you all to Vijay Vallabh Sunday Hour. I thank our today's eminent speaker, Ms. Kalpita Kshirsagar, for accepting our invitation and presiding over the webinar on the topic Critical Thinking in Social Studies. It is rightly said that social sciences have a critical contribution to make in helping us understand, imagine, and craft a more sustainable future for all. We at Acharya Shri Vijay Vallabh School always try to inculcate the values, ethics, and develop the interest in social science subject by planning and executing various activities like investiture ceremony, celebrating various festivals, jayantis, arrange field visits, play role models, and many more. Thus, this help and motivate our students to become confident, global, and responsible citizens. This also encourages them to help critically think and creatively. I wholeheartedly thank our chairman, Sri Subhashji Parmar Sir, for the enormous support given to us to arrange such an informative webinar. It is rightly said, learn from yesterday, live for today, and hope for tomorrow. The important thing is that not to stop questioning because learning is a treasure. So let's move further and gain more knowledge on the topic critical thinking in social studies and make this morning knowledgeable. Thank you. Over to you, Sonal. Thank you, madam. Now, it's an honor and privilege for me to introduce our today's guest of honor. On behalf of our school, I'm extremely glad to welcome our guest, Ms. Kalpita Kshirsagar, for today's webinar. Ma'am has completed
her master's degree in a political science from Pune University. Currently, ma'am is working as a subject facilitator at Drive Change Learning and Resource Center Foundation, which is a learning forum. Ma'am has 13 years of experience of working in many schools and NGOs in collaboration with state government and Pune Municipal Corporation for various educational projects. Ma'am also has an experience in teaching through constructivism, experiential learning, project-based learning, and collaborated with teachers and guided them with the various innovative techniques in the field of teaching. Ma'am is very passionate educator who always wants to explore the ways of going beyond the subject and looking at learning as a holistic process. Ma'am, we are indeed very fortunate to have you with us this beautiful morning. Now, I request ma'am to share her valuable views. Over to you, Kalpita ma'am. Thank you so much. Thank you so much, Sonal ma'am, for the kind words. I think I've been trying to learn every year as a teacher, and let's dive right in. One of my favorite subjects or topics to talk about is critical thinking in social studies. And I think me being a student of social studies for such a long time, this topic is very dear to me. And today's session, I will be sharing some of my thoughts and also be taking, there's some lovely students with us for this session. I'll also be taking them through an activity where we all can observe how critical thinking looks like. You know, many times we think, oh my God, critical thinking is like a big deal. How do I do it in my classrooms? How do I bring it in my classrooms? Itna time kahan se hoga, you know, itni energy, time kahan se laungi main? And those are all, you know, logical thoughts. But I think this session is going to tell you how a simple question can bring about critical thinking in our students. So let's start. I'm going to share my screen with all of you. So just give me a minute. Can I please get screen sharing rights? Yes, ma'am. Given. Thank you. Are you all able to see my screen well? Yes, ma'am. Perfect. So my theme for this session is going to be social studies, opening up the world. How textbooks can be our gateways into the real world, into children speaking, expressing, thinking, and how this can be managed. And today I'm going to talk about one of those strategies. So my first thought to all of you, and please observe what reactions you get. आपको ये तीन चीजें सुन के आपको क्या लगता है? मैं आपको तीन चीजें बताने वाली हूँ हिस्ट्री के बारे में या सोशल स्टडीज के बारे में. What if I told you, अगर मैंने आपको बताया कि history is a creative subject, it can be very creative. You can solve problems in social studies. So जैसे math is famous for problem solving skills. Even science sometimes, even social studies involves a lot of problem solving, can involve a lot of problem solving. And geography, history are linked together. And you can actually teach them both together. What if I told you these three things? You know, what if we dream that social studies ये सब कर सकता है? ये कैसे किया जाएगा? कर तो सकते हैं. We can do all of this. How is the main question. Theory में सुन के, when you listen to it, it sounds wonderful. Yes, we should do all of this. You know, all of us dream of those things. How do we manage it? This is where critical thinking comes in. Now, what is to think critically? What does it mean? Simple भाषा में बताया जाए, what is to think critically? To think critically is you learn something or you study something so well or so deeply, you connect with the study material at that level where you have your own opinion about it. Of course,
हर एक सब्जेक्ट में फैक्ट्स तो होते हैं, हिस्ट्री में भी होते हैं, ज्योग्राफी में भी होते हैं, बट फैक्ट से आगे जाके अपना ओपिनियन बनाना, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग इन अ नटशेल। अगर मेरा अपना खुद का एक ओपिनियन हो उस टॉपिक के बारे में जो मेरे फ्रेंड से अलग हो सकता है, इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट माय फ्रेंड इज थिंकिंग, बोथ ऑफ अस नो द सेम फैक्ट, बट दैट इज वेयर द ब्यूटी ऑफ माय ब्रेन, कि मेरा माइंड कैसे काम करता है, ये क्लासरूम में आ जाता है। तो ये ओके, लर्निंग समथिंग वेरी वेल एंड हैविंग माय ओन ओपिनियन अबाउट इट, कैसे करेंगे? ये तो डेफिनेशन हो गया क्रिटिकल थिंकिंग का। हाउ विल वी मैनेज दिस? I have a proposition for all of you, and the children who are attending this session can also read this carefully. I'm going to present to you two histories. Okay, एक history अवतार 1 है, एक history अवतार 2 है. Okay, पहला अवतार हिस्ट्री का, जहां पे बहुत सारे डेट्स हैं जो आपको मेमोराइज करने पड़ते हैं. यू हैव टू मेमोराइज दोज डेट्स. एक है जहां पे आपको किसी, यू हैव टू गिव रीजंस, यू हैव टू गिव डेफिनेशंस फॉर समथिंग. ये एक इवेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ. यू हैव टू एक टेक्स्ट बुक से पढ़ो, यू हैव टू रीड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड लर्न, मेमोराइज व्हाटएवर इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, द वे इट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक. ड्रॉ डायग्राम्स एंड लेबल देम. एंड कुछ बदलता नहीं है. फ्रॉम 1 ईयर मैंने जो मैंने हिस्ट्री पढ़ा था जब मैं स्कूल में थी, और मैं जो आज हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, उसमें कोई फर्क नहीं है. थोड़ा बहुत इवेंट्स एंड फैक्ट्स का फर्क है, बट हिस्ट्री डजंट चेंज, इट्स स्टैग्नेंट, इट्स देयर. On the other side, let me present to you one history. क्या होगा अगर हिस्ट्री में ये सब किया जाए? जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स हम पढ़ते हैं उनको रियल लाइफ में लेकर आना, क्रिएटिंग फेसबुक पेजेस फॉर दीज हिस्ट्री कैरेक्टर्स, जहां पे हम उनकी इंफॉर्मेशन लिखें और वो अपडेट करते रहें. आंसर्स जिसमें डेफिनेशंस, रीजंस भी है, पर मैं क्या सोचती हूँ, व्हाट आई थिंक और व्हाट यू थिंक अबाउट दैट पर्सन, दैट इवेंट, that is also brought to the forefront. What if I get to talk with my friends? क्या होगा अगर मैं अपने दोस्तों के साथ बात करूं and I get to convince them कि मेरा point of view is logical. You know, there can be many rights. We don't live in a world of right and wrong. एक ही right है और एक ही wrong है. बहुत सारे right भी हो सकते हैं, right? हमारे logical thinking पे depend करता है और context पे depend करता है. Projects जिसमें मैं decide करूं मेरा idea क्या है, right? और एवरी ईयर कुछ ना कुछ नया डिस्कवर होता रहता है. तो मैं शायद एक राजा के बारे में या एक इवेंट के बारे में 2-3 बार पढ़ लूं. हर एक बार पढ़ने से मेरा कुछ अलग ओपिनियन आ रहा है, मेरा ओपिनियन आगे बढ़ रहा है. एंड आई थिंक इट्स सेफ टू से, राइट, द सेकंड हिस्ट्री साउंड्स वंडरफुल, क्योंकि बच्चों को सोचने का मौका, बच्चों को ही नहीं, आई थिंक द अडल्ट्स हु आर वाचिंग दिस ऑन फेसबुक, आपको सोचने का मौका मिलता है. हिस्ट्री 2 क्लियरली गिव्स यू मोर, जहां पे आपका खुद का ओपिनियन आ सके, जहां पे आप खुद डिसाइड कर सके आपको क्या लगता है और आप ये लोगों से बात कर सके इसके बारे में. सो हाउ डू वी क्रिएट अ वर्ल्ड इन विच ये जो हिस्ट्री 2, हिस्ट्री अवतार 2 है, वो क्लासरूम में लाया जाए. एंड एज द सेशन प्रोग्रेसेस आप देखेंगे ये सिर्फ क्लासरूम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं. दिस इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्लासरूम्स, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडीज डे टू डे लाइफ, द होल नेशन एज सच और द होल वर्ल्ड एज सच. Today's world, right? Children, we know this. Today's world, जहां पे हम गूगल पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, राइट? मैं आपको बोलूं कि ये एक राजा है, वो कब, when was he born, उसने क्या किया, when did he pass away, आप गूगल करके मेरे को बता सकते हो ना 2 मिनट में, राइट? तो आजकल के जमाने में इंफॉर्मेशन होना is not enough. एक जमाना था, there was a time where, you know, collecting information was very important because information was not available for all of us. But in today's world, information is available. It is at our fingertips. तो हम अब as students of 21st century, हम information पे रुक नहीं सकते. We should not. And actually, this is even for grown-ups. We can't stop at information. Knowing information मिल गया मुझे, Google से मिल गया, बुक से मिल गया, मेरे टीचर से मिल गया. Yes. उसके आगे क्या? यहाँ पे तो हम नहीं रुक सकते, बिकॉज अभी तक तो हम हिस्ट्री में ऐसे ही पढ़ते आए हैं, इट इज सो बोरिंग, नो, कि बस इंफॉर्मेशन ले लो, बस और कुछ नहीं करना उसके बारे में. डू नथिंग अबाउट इट, जस्ट गेट इंफॉर्मेशन एंड, you know, create it on paper. One step further, to investigate the knowledge that you do have, that you do get, investigating that knowledge
for its validity. There are today you go on Google and you type one person's name, you will get so many different opinions about that person. Investigate karna ki which is a truthful opinion, which is an honest opinion, which is a logical opinion about that person. What actually happened in history. And expressing, once आपने investigate कर लिया है, that means more of your mind is involved, because knowing तो one way process है ना. Knowing is one way. My teacher gives me knowledge and I know it. Okay, I learn it, I memorize it. Perfect. But when I investigate, I am stepping further. I am putting a step into history and saying, okay, let me find out. Yeah, investigating में ना, children and everybody who's listening, the joy of finding things out. कि अरे यार मैंने ये, I found it out. You know, मेरे को लगता है कि this raja or this person, you know, this country won the world war because of this. This is my finding, no, my thought. And how wonderful it will be to investigate something and have our own opinion. And then finally not stopping at that, giving children the chance, the opportunity in classroom to express what they're feeling with each other, with the classroom, everything in all directions, sharing in all directions. So ये था मेरा knowing to investigating to expressing. That is where we will create a fertile ground for critical thinking. अगर ये 3 चीजों का scope हो हमारे classrooms में, in our learning, even if we are learning on our own, अगर हम ये 3 चीजें, if we continue to bring these 3 things in our history learning, that will create a great fertile ground for critical thinking. Perfect. So now it's a little activity that I promised you, and I'm sure the children are excited about it. Simple activity. Kids, don't be nervous about it. Okay, it is free. Critical thinking classroom में एक होता है. There is no right or wrong answer, so don't worry about it. Correct? Your opinions matter. हमें सुनना है आपको क्या लगता है. Okay? Textbook वगैरह छोड़ दो अभी के लिए. No problem. Okay? Just for this activity. So एक benefit. Let's focus on one benefit. Okay? Making space in history for your amazing personal and thoughtful opinions. We believe each one of you has amazing minds. You think every day, right? Let's bring that wonderful ability into classrooms. तो ठीक है then, एक काम से शुरू करते हैं. अब हिस्ट्री तो हमको पता है, very infamous है ना. चलो हर एक each child, you will tell me 10 important dates in history. Don't worry, I'm joking. Don't worry. I'm not going to make you tell me 10 dates in history at all. That's not why we are here. So yeah, you can be relieved. I'm going to show you some pictures, okay? Pictures को ध्यान से देखना, हाँ? और the dates part was a joke, okay? I'm not going to test you on the dates. Let's start with pictures, okay? हर एक picture मैं आपको 1-1 minute के लिए दिखाऊंगी और वो एक slide पे, this slide will get filled with pictures. I want you to focus on what is going on in the picture, okay? What is the picture about? What is going on? Have all of you studied one or the other kings in history? कोई ना कोई king के बारे में हमने पढ़ा है ना? Yes. Right? तो अभी कौन सा king है वो matter नहीं करता है, okay? We are just going to talk about kings and queens, okay? तो एक picture देखो and see what is happening in the picture. These are some pictures you might have seen in your textbooks also. Look at all the things the king is doing now. Bas, these are the pictures I wanted to show you. Look at the pictures carefully, okay? All right. Now tell me, everybody, all the kings that you have studied in your textbooks, okay? All the kings and queens that you have studied in the textbook. King बनने के लिए कोई ना कोई quality लगेगा ना, king या queen बनने के लिए कोई ना कोई quality लगेगा, right? Correct? तो
कौन से आप बताइए, what are the qualities of a king or a queen? What are the different qualities जो होने चाहिए अगर किसी को किंग या क्वीन बनना है? ये तो क्वालिटी होने चाहिए, 2-4 बताइए. Ma'am, here the king should be intelligent, brave, kind, and Okay, intelligent, brave, kind. not to be greedy. Okay, यश आपको क्या लगता है? King should be always help others. Yes, thank you. Wow, thank you Sahil. Yash, anybody else? King should always be helpful to others. और कोई क्वालिटीज ये पिक्चर्स में देख के बताओ. Any other qualities of a king? King should be listen to political issues anytime, everywhere. Okay. He have to administrate his kingdom properly. He should learn to manage his kingdom properly, na? Should administer his kingdom properly, because that's their responsibility, right? It's it's important. Anybody else? We'll take 2 more minutes only. Socho, it's okay. Ma'am, he should have fighting skills. He should be adept at fighting. Yes. Like the lion is the king of the jungle, king should be also like that, brave. He should be brave. Okay, great. Good going, people. Anything more? Anything that nobody has said? Kuch alag you think? He should be confident on his decisions. He should be confident about his decisions. Wow, great. Amazing. So all of these things that you told me that are necessary for a king, let's see, I had predicted that you might say a few of these qualities. Yeah, read the qualities that I have written on the slide. Do you all agree that these are the qualities that a king should have, technically? King or queen? Yes? Yes, ma'am. Yes, These are the ma'am. qualities. Now, look at these qualities given and think. Now this is where your beautiful minds will come into play, okay? I want you to think. Brave, intelligent, kind, educated, strong, smart, powerful. What do you individually, तो साहिल खुद के लिए सोचेगा, खुशी अपने लिए सोचेगी, Aryan will think about himself, Yash will think about what he thinks, okay? किसी को आपको एक दूसरे का आंसर नहीं बताना है, आपको खुद का आंसर बताना है. इन सब में से which one is the most important one? Ma'am, educated. Smart. Okay, क्यों? Why is that important? Ma'am, because when the king will be educated, he will have ma'am means smart mind, and he can take more decisions properly. He can administrate his kingdom properly. Okay, so education. Okay, Aryan, what do you think? I'm smart. Okay, why? क्यों smart होना चाहिए? Because anyone cannot make him fool. Okay, anyone cannot fool him. Yes. What do others think? In some Ma'am, also brave. Okay, Powerful. you think Brave. Because brave? when he will go to war, he should means win the war and come. Yeah, he should, and because he also has an army, na Yash. So if he is not brave, then the army is also not going to be brave, right? They will Yes. lose heart. They will not be able to go on fights, or they will not be able to go to war. Okay. So अब एक थोड़ा सा sorry. He should be kind. Oh, is that you, Neha? Yes, ma'am. Thank you so much, Neha, for sharing. He should be kind. Neha, why do you think he should be kind? क्या होगा kind होने से? Ma'am, if he will be kind, then only people will come to him and share their problems. Oh, wow. Great. So if he's kind, he creates a personality, right? So people can come to him with their problems, right? So I can see like a nice mixture here. Has to be brave and kind. So when he goes to war, he should be very brave, and but when he's with his people, he should also be kind. Anybody has any other thoughts about which one should be the most important quality?
Ma'am, two qualities are the most important. One is educated and one is brave. Wow, one is educated. So everybody who's here, did you see? Thank you so much, children, for participating in this. Yash, Neha, Sahil, Khushi, Aryan, thank you so much for participating. So did you all see when I asked questions? So in history, everybody who's listening this, in your opinion, what do you think is a very powerful sentence? It's a very powerful tool in classroom. I told you this information. What do you think about it? Because that is where children will begin to think that, oh, हिस्ट्री में मैं भी कुछ कर सकता हूँ, लाइक मेरा भी कोई पार्टिसिपेशन है हिस्ट्री में, यू नो, ऐसे नहीं है कि टेक्स्ट बुक मेरे को बता रहा है और बस हो गया. टू वे स्ट्रीट होता है ना, वन वे स्ट्रीट नहीं, दोनों तरफ से ट्रैफिक चल रही है, दोनों तरफ से थॉट्स आर कमिंग एंड गोइंग टुवर्ड्स द चाइल्ड. सो आई बिलीव इन हिस्ट्री. In your opinion, what do you think? According to you, that this statement is very, very, very powerful because it gives scope for people to step into history. Food for thought. Whenever a subject invites us in, okay, this activity was just a sneak peek into what history can do or what history classrooms can be like. When a subject invites the children in, we are able to achieve a lot of things. हमें आइडियाज कनेक्ट करना आ जाता है बिकॉज कॉन्वर्सेशन बढ़ जाती है, तो आइडियाज का कनेक्शन बढ़ जाता है. एक्सप्रेस आइडियाज एंड थॉट्स, क्योंकि उसके लिए क्लासरूम में स्कोप बनता है, टाइम बनता है फॉर द चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज एंड एक्सप्रेस देयर थॉट्स. टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन आउटसाइड. तो अभी जो आपने सबने देखा, ये बच्चे जो मुझे बता रहे थे, वो टेक्स्ट बुक में लिखा नहीं था. दे वर मेकिंग देयर ओन नॉलेज राइट इन द क्लासरूम. कम अप विद सॉल्यूशंस. तो अगर हम किसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स उस टाइम पे द किंग और क्वीन एट दैट टाइम वुड हैव हैड सम सॉल्यूशंस. उन्होंने सॉल्यूशन सोचे हैं, पर वो प्रॉब्लम बच्चों को देना और बोलना अगर आप उनकी जगह पे होते तो क्या करते, आपका सॉल्यूशन क्या होता है इसके लिए. So while history, which brings me to a very interesting thought. So while history is about knowing events and knowing people, it is also about making children. So this is where a value system comes in. I become empathetic. हम आजकल के जमाने में देखते हैं ना, everybody and anybody is criticizing, the leaders of a nation. But how is it to step in their shoes? How is it to step into the shoes of a great person and look at the problem for them from their point of view? There is a great empathy lesson over here. हमको पता चलता है कि कितना डिफिकल्ट होता है उस पोजीशन में डिसीजंस लेना. Another thing that happens is we and the children as teachers and as learners, we dive deep into topic knowledge, into content knowledge. क्योंकि अगर मुझे अपना ओपिनियन बनाना है, if I want to make an opinion about something, I should know the content very well. तो ऑटोमेटिकली कंटेंट पे ध्यान चला जाता है because I have to make my opinion, right? So मेरा opinion has to be logical, right? Making connection with real life. Now, अभी जो मैंने एक्टिविटी किया about the king and queen, आज का तो जमाना किंग और क्वीन का है नहीं, but if you saw on my slide earlier, I had written leader. Today's political leader. So bring that conversation into, okay, आज तो king and queen है नहीं, but today we have political leaders who are responsible to govern us. वो political leaders में कौन सी qualities होने चाहिए? अभी तो political leaders को they don't have to go to war, right? But then what are the other qualities that the political leaders of today should have? तो जब बच्चे उस राजा के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो वो कनेक्ट कर पाएंगे आज के जमाने से. Form opinions that are based on logic. तो जब ये बाकी सारी चीजें हो जाती है, बच्चों के opinions are based on logic and content knowledge. Which opens up, I would just like to close this for now. Before we open up for question and answers, I would just like to open this up for conversation. I'm going to go back to this slide. Knowing, investigating, and expressing. I cannot, emphasize enough. And this is actually, I would like to
connect with the teachers who are in this session कि हमने भी, when we learned history, we did not learn history from this point of view, knowing, investigating, expressing. So when we bring that into our classrooms or when we are talking to the children, जब हम भी ये करते हैं तो हमारे लिए भी history learning becomes a different level of learning. We also begin to engage with the subject at a different level. So classroom में critical thinking लेकर आना is not just for children. I think it is for everybody because it ensures that even a teacher is able to grow. It ensures that even a teacher is able to look at the subject and question things क्योंकि हमारा भी तो thought होता है, right? Even we as teachers are brilliant people. So for us to connect with the subject beyond the textbook or even deeper than the textbook, I would say, because textbook is about facts, knowing the facts, and it's a great resource. But we should, in today's world, like I said, knowledge is everywhere. We should go forward, get knowledge from various sources, investigate, and even us as teachers, expressing what we feel about something critically is very, very important. All right. With that, I would like to open the session up for question answers. Okay, thank you, ma'am, for all your valuable views. We really appreciate the wealth of knowledge and insight you shared today. It will surely help us. Now I hand over the session to Ms. Jyoti Sitapure ma'am for the question answer session. Over to you, Jyoti ma'am. Thank you, Sonal. Good morning, everyone. Before we jump into the question answer session, let me thank Kalpita ma'am, Kalpita ji, for this beautiful activity. So really, we are so privileged. As a teacher, we are so privileged to talk about the topics which are actually not there in the textbook and bring out the critical thinking from the minds of the students and make them understand the topic very well. So we are actually inculcating the values in the history books. Though I'm not a history teacher, I am a geography teacher. But after seeing this activity, I really feel that I must try sometimes, taking a history class. It was so wonderful. And the students have really enjoyed that. And our viewers also must have agreed that it is not only about the facts and all that, but it is about the qualities of the people who are we talking about in the history books. Thank you very much, ma'am. So we are going towards the question answer session. And the first question we are having is from Yash Goyal. So over to Yash for your question. Good morning, my respected teachers and my dear friends. My name is Yash Goyal from Standard 8. So my question is that though I like to history and it is my favorite subject, but when it comes to exam, most of us have the problem of remembering the names and the dates. So if you give us some trick, it will be most helpful for us. Thank you. Yes, Yash, I totally agree with you. बहुत सारे हमारे जो दर्शक है, उन्हें हिस्ट्री बहुत पसंद है, उन्हें इतिहास पढ़ना अच्छा लगता है. हमारे सारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि इतिहास में आने वाले दिनांक, साल और अलग-अलग लोगों के नाम हम किस तरह से याद रखें. क्या ट्रिक हो सकता है इसके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. Over to you, Kalpita ma'am. Thank you for that question. And yes, thank you for saying that you enjoy history. It's very heartwarming. Thank you, Jyoti ma'am. And ये हमेशा का this age old problem है history के साथ. History लोगों को आप किसी भी even grown up से आप पूछो ना कि आपको हिस्ट्री पसंद है. हाँ, पसंद तो है पर डेट्स याद नहीं रहते हैं. बिल्कुल नहीं. तो पहला ट्रिक ना यश मैं आपको बताती हूँ. यश एंड दिस इज फॉर एवरीबडी हु इज अटेंडिंग दिस सेशन. आप सोचिए आपके फ्रेंड्स में या आपके रिलेटिव्स में जिनके जन्मदिन आपको याद रहते हैं, दे आर ऑलवेज नियर सम बिगर फेस्टिवल. कि दशहरे के बाद 2 दिन, संक्रांति से पहले 3 दिन इनका बर्थडे होता है. ओ ज्यादा, आई एम सेइंग मोर क्लियरली यू रिमेंबर दोज बर्थडेज व्हिच कम एट अ किसी बड़े फेस्टिवल के आसपास आते हैं. सो ह्यूमन माइंड ना सब कॉन्टेक्चुअली सीखता है. हमें कोई भी चीज ऐसे इंडिपेंडेंटली याद नहीं रहती है. अगर हम बड़े तो
यश, पहली चीज मैं बताऊंगी इस डेट्स वगैरह के लिए ना, ये जो स्किल बेस्ड चीजें रहती हैं और मेमोरी बेस्ड चीजें, उसके लिए अगर आप ड्राइंग, यूज योर आर्ट ऑफ ड्राइंग. डोंट बी स्केर्ड टू इंटीग्रेट आर्ट एंड हिस्ट्री टुगेदर. अगर आपको मराठा हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है और उनके कुछ डेट्स हैं, तो मराठा हिस्ट्री पढ़ते हुए आप निजाम शाही भी पढ़ते हो, आप आदिल शाही भी पढ़ते हो, आप मुगल टाइमलाइन भी पढ़ते हो, राइट? क्योंकि उस टाइम पे सब जगह पे कुछ ना कुछ चल रहा था, तो उसका एक ड्रॉ करके टाइमलाइन बनाना, आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जब हम देखते हैं तो हमें ज्यादा याद रहता है. इट्स ऑल्सो विजुअली, बिकॉज आप ड्रॉ कर रहे हो किसी चीज को, जब आप वो टाइमलाइन बना रहे हो एंड यूजिंग ऑल कलर्स एवरीथिंग, तो वो टाइमलाइन बना लेना बुक में एंड टू कीप सीइंग इट. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू लुक एट कौन सा इवेंट कब हुआ और उस टाइम पे मुगल क्या कर रहे थे, यू नो, उस टाइम पे व्हाट वाज गोइंग ऑन इन आदिल शाही, कंपैरिजन में देखना कि क्या चल रहा था. जैसे हम जब वर्ल्ड वॉर पढ़ते हैं, तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तब उस टाइम पे इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल वाज गोइंग ऑन ना, साइड बाय साइड, राइट? तो हमें दोनों चीजें याद, अगर दोनों चीजें कॉन्टेक्चुअली देखे तो याद करना इजियर हो जाता है. along with the skill, as I said, art and history, bring it together. You know, आप फ्लिप बुक बना सकते हो छोटी वाली, क्योंकि आप फिर वो एक्टिविटी एंजॉय भी करोगे कि आप फ्लिप बुक छोटा छोटा बना रहे हो फोल्ड कर करके, विद वन इवेंट आपको दिखता जाएगा जैसे आप आगे आगे जाओगे हिस्ट्री में. सो फॉर दिस स्किल बेस्ड, यू नो, दिस इज अ वंडरफुल क्वेश्चन एंड मेनी पीपल स्ट्रगल विथ रिमेम्बरिंग डेट्स. पर ये भी याद रखना बहुत जरूरी है कि हिस्ट्री, I know as students and even teachers who are here, I know that even the state curriculum gives a lot of emphasis on dates. पर हमें कहीं ना कहीं together, you know, हमें इससे बाहर निकल के बस ये देखना है कि फ्लो, मुझे लॉजिकल फ्लो पता है कि नहीं चीजों का, यू नो, वो देखना ऑर्गेनिक, क्योंकि वो आपको एक स्टोरी के तरीके से भी याद हो सकता है. अगर आप एक स्टोरी बना लो उसकी, तो आपको किस टाइम पे क्या हुआ ये याद रह सकता है, यू नो, क्रिएटिंग दोज लिंक्स. So I think that is one trick. Even for me as teacher, मैं भी ड्राइंग बनाती हूँ बहुत बार टाइमलाइन का, फिर मुझे याद रहता है और वो टेबल पे लगा हुआ रहता है. So this definitely helps. Visual, creating a visual for it. Thank you, ma'am. Yes, thank you, Kalpita ma'am. This is a really very nice tip. And students who have a phobia for the dates, they will really get a lot of help. So it means that our visual memory works very nicely over here. Yes. So naturally the students will also enjoy, and they will have their own notes for you know, the reference. So at a time they may be able to remember many things. So, and the human brain is also able to remember many things in comparison much better. So thank you once again, Kalpita ji. So now moving towards our next question, and that is from Neha Chaudhary. So over to you, Neha. Good morning, everyone. My name is Neha Chaudhary from 8th class. Ma'am, my question to you is, most of the students think that what is the use of studying history which has happened long back? So how can learning history help me to build my future? Okay, Neha. Yes, I understand your problem. नेहा की तरह अधिकतर विद्यार्थी ये सोचते हैं कि जो इतिहास हजारों साल पहले घटित हुआ, उसे पढ़ने का क्या फायदा हो सकता है. साथ में हम ये भी जानना चाहते हैं कि इतिहास सीखना मेरे दैनिक जीवन में Hi, I could hear the question. Shall I repeat the question? Yeah, can you please repeat the question? Okay, Just a half of it last. Okay. नेहा की तरह अधिकतर विद्यार्थी यह सोचते हैं कि जो इतिहास हजारों साल पहले घटित हो चुका है, उसका अभी हमें पढ़ने से क्या फायदा हो सकता है. साथ में हम ये भी जानना चाहते हैं कि इतिहास सीखना मेरे दैनिक जीवन में मेरी कैसी मदद कर सकता है. जिस तरह के गणित, अंग्रेजी, ये सब्जेक्ट हमारे मतलब भविष्य के लिए मददगार होते हैं, तो बहुत लोग सोचते हैं कि इतिहास सीखने से हमें क्या भविष्य में क्या फायदा हो सकता है. स्टूडेंट्स भी ये सोचते हैं.
So over to you, Kalpita ma'am. Absolutely. Thank you. Thank you, Neha, for that question. ये again like dates ना, ये age old है कि history तो हो चुका है ना, अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे उसके बारे में बात कर करके, ओके लड़ाई हुई ठीक है, आगे क्या, हाँ हो गई बस, हर साल वही पढ़ के क्या करेंगे हम लोग. My response to this is ना, Neha, knowing about your family, knowing about your family's history, ये क्यों जरूरी है? अगर हम खुद से पूछे, हर एक कंट्री का, हर एक रीजन का, हर एक स्टेट का ना एक कैरेक्टर होता है, जैसे लोगों का होता है ना कैरेक्टर, सोच, वो सब हिस्ट्री से जुड़ी हुई होती है. क्योंकि वो एक, अगर हम एक कंट्री के बारे में बात करें जिसमें हमेशा झगड़े होते रहते हैं, हमेशा, आज के दिन में, हाँ पेपर में भरा हुआ होता है कि लोग झगड़ रहे हैं उस कंट्री में कंटिन्यूसली. अगर मैं सिर्फ आज का ले लूं और सोचूं अरे यार ये कंट्री में इतने झगड़े क्यों होते हैं, और मेरे को हिस्ट्री का, आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री, आई विल नेवर नो व्हाई दे आर फाइटिंग. बट इफ आई dive deep into history, I will know why are the conditions today the way they are. जैसे होता है ना हमारे फ्रेंड्स में भी, दो फ्रेंड्स अगर झगड़ा कर रहे हैं तो यू ट्राई टू फाइंड आउट ना, अरे पर हुआ क्या, व्हाट हैपेंड, टेल मी व्हाट इज दैट इज हिस्ट्री. यू आर गेटिंग टू नो हिस्ट्री कि अरे ये झगड़े का बैकग्राउंड क्या है. या फिर कोई अच्छी चीज है, अगर तुम्हारे फ्रेंड को, इफ योर फ्रेंड गेट्स एन अवार्ड टुमारो एंड यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, you ask your friend, right, what did you get an award for? Oh, okay, you participated in a competition. Okay, what all did you do? When did this competition start? Oh, what happened? So today, that is how today is connected to yesterday, and you cannot understand today clearly till you understand yesterday. क्योंकि what is happening today के बहुत सारे roots are, पिछले साल क्या हुआ, 10 साल पहले क्या हुआ, 50 साल पहले क्या हुआ. तो ये, पर नेहा यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम जब हिस्ट्री के, आई थिंक ये आपका क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है कि जब हम हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो हम उसको प्रेजेंट में लाना भूल जाते हैं. ओके, some of the Mughal kings were great, you know, they did a lot of good with respect to administration. What are some things that the kings did which we still use today? ऐसे हैं 4-5 चीजें हैं जो उन्होंने शुरू किया था और हम अभी भी यूज करते हैं. तो व्हाट आर दोस कनेक्शंस? क्योंकि वो कहां से आता है, उसकी बैक स्टोरी पता चलती है. आप बोलते हैं ना किसी के साथ अगर बेस्ट फ्रेंड्स आप हो, यू नो एवरीथिंग अबाउट देम, राइट, उनका पास्ट, उनकी फैमिली कहां से है, वो क्या करते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है. इट्स द सेम विथ हिस्ट्री. आई थिंक वो कनेक्शन जरूरी है. आई थिंक पीपल फील दिस, क्योंकि हिस्ट्री को सिर्फ हिस्ट्री में ही पढ़ाया जाता है, उसको प्रेजेंट में लाना भूल जाते हैं लोग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, Kalpita ma'am, that's true. Learning history is so much important. Every moment which is passed away is actually a history. And you have given a very nice example that how our family and the people in our family, how they are helping us, because what happened yesterday, because of that we are over here. So that is very true. I got the important line that we forget to bring that history in the present. Thank you very much. So going towards our next question, and that is from Sahil Danduke. So over to you, Sahil. First of all, good morning to everyone. My name is Sahil Danduke and I am from class 8. And my question to you, ma'am, is that after getting a lot of clarity about the subject history, most of us also wanted to know how the learning of the subject geography can be helpful for us in our future, ma'am. Thank you, Sahil, for the question related to geography. Being a geography teacher, yes, many students have this question कि हम बड़े होकर geography अभी पढ़ेंगे तो बड़े होकर इसका हमें क्या उपयोग होगा. साहिल का जो प्रश्न है, यही प्रश्न आमतौर पर कई लोग करते हैं कि भूगोल विषय पढ़ने से हमारे भविष्य में क्या फायदा हो सकता है. So over to you, Kalpita ma'am. I think इतिहास, भूगोल, इवन नागरिक शास्त्र फॉर दैट मैटर, अभी मैं भूगोल के बारे में बात करूंगी. यू नो, बहुत लोग सोचते हैं कि जैसे हिस्ट्री है वैसे ही हिस्ट्री जैसे कनेक्ट करने की जरूरत है फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट. ज्योग्राफी को भी मेरे डेली लाइफ में ज्योग्राफी कहाँ यूज होता है वो लाना बहुत जरूरी है. क्योंकि हाँ, अर्थ के मूवमेंट्स तो होते हैं, राइट, देयर आर मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, देयर आर सी वेव्स,
all of that, how is it connecting to my life right now? And actually आपको देखा जाए ग्रेटा थनबर्ग, ये जो सारा एनवायरमेंटल मूवमेंट अभी चल रहा है इन द करंट टाइम्स, दैट इज मेकिंग ज्योग्राफी इवन मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट. एंड एक्चुअली in the future, conserving environment is going to be a major career, is going to be a major area of research, because that is what we need today. Factories, industries में तो हमने डेवलपमेंट कर लिया है, but us getting to know our own environment, इसमें थोड़ा लैक है. कनेक्टिंग विद आवर एनवायरमेंट. अगर कल पूना में या अब करंटली इन पुणे देयर इज अ कोल्ड वेव गोइंग ऑन, ये क्यों चल रहा है? और इसी से अ लॉट ऑफ सोशल थिंग्स आल्सो गेट कनेक्टेड, कि अगर कोल्ड वेव चल रहा है तो विच आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल दैट विल गेट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इट. ये कोल्ड वेव की वजह से ये जो कोविड का चल रहा है, हाउ इज दैट, इज इट गोइंग टू हेल्प इट, इज इट गोइंग टू स्टॉप इट, क्या, व्हाट इज द कनेक्शन दैट इज गोइंग टू हैपन? या व्हेनेवर देयर इज untimely rain, to know why that rain is happening, that connection of geographical concepts to my daily life. So geography is very much like a science, right? It has a lot of these facts and concepts and theories. बहुत सारे होते हैं कि अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे काम करता है, cause and effect. साइंस की तरह ही होता है ज्योग्राफी का. पर उसको अच्छा ये हो रहा है, मुझ पे क्या फर्क पड़ेगा? Now the volcano that erupted a few days ago, वो तो वहां हो गया ना, पर how is it affecting my life? उसके बारे में बात करना, that is very very, and that is how geography will help you. I think geography as a subject तो important है ही, but for us to lead responsible lives, that is why geography is important. हमें समझना कि हमारे एक्शंस का इफेक्ट क्या हो रहा है on the world, and all of the problems we see today in the environmental sector, like जो हम कर रहे हैं हमारे environment के लिए, these are all, this is all a product of poor geography education. क्योंकि हमने geography को सिर्फ concepts की तरीके से पढ़ा है, पर मैं क्या कर रही हूँ, and how am I affecting geography, human connection with geography, वो जरूर, जैसे हिस्ट्री में पास्ट को प्रेजेंट में लेकर आना है, वैसे ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट को ह्यूमन तक लेकर आना है, कि हम क्या कर रहे हैं और उस एक चीज का हम पे क्या इफेक्ट होगा. दैट इज इम्पोर्टेंट. थैंक यू मैम. Yes, thank you, Kalpita ma'am. It is really true that learning geography is so much useful for your everyday life, and the concept should actually imbibe in us so that we become responsible for our environment. And geography is actually talking about the relation with the environment and the human beings. So that is really true. So now we are moving towards our next question, and this is the last question, and that is from Khushi Jain. So over to you, Khushi. Good morning, everyone. My name is Khushi Jain. I am studying in Standard 8. Ma'am, my question to you is, can critical thinking be brought in for all topics in social science? Very good question, Khushi. अब हम लोग ये जान गए हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि हमारा मत जो है वो बताना या वो रखना कितना जरूरी है. तो क्या हम ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है ये सोशल साइंस के सभी टॉपिक्स के लिए यूज कर सकते हैं क्लास में? मतलब कि हम बच्चों से बात करके वी कैन मेक अ क्लासरूम एनवायरनमेंट दैट एवरीवन इज मेकिंग देयर say what they want to say and relate to the topic. So over to you, Kalpita ma'am. Thank you. And you know what, my response to that question is a short one and a long one. My short response is absolutely 1000%. I think in social studies, each and every topic, you take civics, आप civics ले लो, history ले लो, geography ले लो, these are extremely fertile topics. कोई भी ग्रेड का टॉपिक ले लो, कोई भी इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट ले लो, हर एक में क्रिटिकल थिंकिंग लाया जा सकता है. आज जो मैंने मेरे सेशन में बताया ये एक तरीका है, इन योर ओपिनियन, आप आपका ओपिनियन प्रेजेंट करना क्लास के सामने या टीचर्स के सामने, ये एक तरीका है. अदर डिफरेंट वेज इन विच क्रिटिकल थिंकिंग कैन बी ब्रॉट इज मियरली, नाउ ये टीचर्स के लिए है, थोड़ा ज्यादा टीचर्स के लिए है, कि हम जब
टॉपिक्स को पढ़ाते हैं, टेक्स्ट बुक में तो एक ऑर्डर दिया गया है, चैप्टर 1 टू चैप्टर 9, यू नो, सिविक्स में चैप्टर 1 टू चैप्टर 5, ये दिया गया है, और ये 3 टेक्स्ट बुक्स है हमारे पास. बट टीचर्स आर ऑल्सो ब्रिलियंट पीपल. ये तीनों सब्जेक्ट में ऐसे कौन सी चीजें हैं जो मैं कनेक्ट करके सिखा सकती हूँ? एंड यू नो, इस कॉन्सेप्ट के लिए ना, आई हैव टू थैंक माय फेलो, मैं रिसर्चर कहूंगी, शी इज अ टीचर एंड अ रिसर्चर, सरिता रगड़े, हु टीचेस विथ मी. हमने एक टाइम किया था कि ग्लोबल वार्मिंग ज्योग्राफी में एक टॉपिक था फॉर एवरीबडी, और एंटार्क्टिका एक टॉपिक था, और हिस्ट्री में देयर वाज अ टॉपिक कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन. अब ये 3 टॉपिक एक के बाद एक पढ़ाए जा सकते हैं, बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से देयर इज वन ऑफ द रीजंस फॉर द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग हैज बीन इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैम्पेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है. तो पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन देखना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखना, फिर ग्लोबल वार्मिंग देखना, और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा जहां पे मॉनिटर होता है वो एंटार्क्टिका है, राइट? तो ये 3 चीजों को कनेक्ट करके सिखाना, तो बच्चों के लिए ये 3 सब्जेक्ट अलग अलग नहीं हो जाते, एक से एक रिलेटेड है. एंड व्हेन आई टीच ग्लोबल वार्मिंग, व्हेन आई टीच एंटार्क्टिका में क्या हो रहा है, देन आई कम टू एनवायरमेंट, कि देन आई कैन गो टू सिविक्स, और मैं ये बात कर सकती हूँ कि एनवायरमेंट के लिए हमारा गवर्नमेंट क्या करता है, इंडियन गवर्नमेंट में क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सी चीजें हैं जो एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी है. डिड यू सी हाउ दिस थिंग गॉट कनेक्टेड टू ईच अदर? ये कनेक्शंस जब हम एस्टेब्लिश करते हैं, तो दैट्स अनदर लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग दैट यू ब्रिंग. तो बच्चों को लगता है अरे आज मैम तीनों बुक्स खोलने के लिए बोल रही है, क्यों? तो बच्चों के दिमाग में भी जो बाउंड्रीज होते हैं कि ये हिस्ट्री है, ये ज्योग्राफी है, ये सिविक्स है, अलग अलग है, ये थोड़े थोड़े ब्रेक होना शुरू हो जाता है. पीपल बिगिन टू लुक एट दीज 3 थिंग्स इन कनेक्शन विद ईच अदर, बिकॉज वो है कनेक्शन में, राइट? So this is another technique where critical thinking can be brought in from the teacher to the students, you know. ये ऐसी चीज है जो teachers have to teach the students through role modeling. तो फिर बच्चे भी शायद अपना आइडिया प्रेजेंट करें कि मैम ये 2 चैप्टर भी कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, you know, and then you can teach them together. It also saves a lot of classroom time, I must say, teaching them in isolation and teaching them in versus teaching them in connection with each other. Those are very important things. Another way in which critical thinking can be brought in SST, तो कुछ चैप्टर्स में आप व्हाट इज योर ओपिनियन पूछ सकते हैं, यू नो, व्हाट डू यू थिंक. कुछ चैप्टर्स में आप कनेक्शन ला सकते हैं. कुछ चैप्टर्स में यू कैन गिव चिल्ड्रन प्रोजेक्ट्स जहां पे वो डिसाइड करेंगे उनका इंक्वायरी, उनको क्या जानना है, तो वो अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाए एंड उसके ऊपर प्रोजेक्ट करें, तो वो किसी चैप्टर से कनेक्टेड हो सकता है. So it could also be like what has been the most significant contribution of the Marathas. आपके पास जवाब नहीं है एज अ टीचर, आप बच्चों से जवाब जानना चाहते हैं और उनका थिंकिंग जानना चाहते हैं. So that is another way how critical thinking. Even स्कूल में एक न्यूज़पेपर शुरू करना जहां पे दिस डे इन हिस्ट्री, जहां पे बच्चे उस डे के बारे में हर हफ्ते एक आर्टिकल या 2 आर्टिकल बच्चे पब्लिश कर सके जहां पे उनका काम सामने आएगा. सो दीज आर सम वेज. तो बट आई 1000% आई एम ऑफ दिस ओपिनियन कि हर एक चैप्टर फ्रॉम सोशल स्टडीज कैन बी टेकन टू क्रिटिकल थिंकिंग. इट एक्चुअली हैज क्रिटिकल थिंकिंग इन इट. वी जस्ट नीड टू डिग इट आउट. Yes, that is very true, Kalpita ma'am. This is a very nice idea that the subjects which are like the lessons which are different, we have to connect them and present a connection of these lessons to the students, so they also start thinking in that particular way. And I also like the idea that we should start like something like a newspaper. So we will talk about this particular day and what happened on this particular day, and then presenting it to the class and the projects. So really wonderful. The critical thinking, we are actually, ma'am, we are missing the classrooms. Though we have online classes, we try to make it. But as a teacher, when I'm standing in front of my 50 students, and when they are answering, when they are thinking, they look so amazing. I feel that we feel that we are sitting in a class with so much, interesting brains over there, intelligent brains over there. And let's hope that the schools get normalized, everything gets normalized very soon. So thank you once again, Kalpita. This was a very nice, wonderful session. As a geography teacher, I really enjoyed. Yes. Yeah.
I just had one closing statement to make before we hand over to the next section. I think Snehal ma'am will be talking. Yeah, I'm not trying to compete with any other subject. I'm not biased as a social studies teacher, but science and math can make or break a child's career. It's very important. They're very important. Science and math can make or break a child's career, but social studies can make or break a nation. And I think we need to remember that. That is, in a nutshell, the importance of social studies, effective social studies education. Yes, ma'am. Truly said that social science studies can break or make a nation. Very, very nice. So this is a very important line you have said just now. So now I hand over the session to Mrs. Snehal Khataukar for the overall views on today's amazing webinar. Thank you. Over to you, Snehal ma'am. Thank you, Jyoti, for a wonderful question-answer session. Thank you. Today, we had an outstanding personality, Ms. Kalpita Kshirsagar, for the webinar on the topic Critical Thinking in Social Studies. Madam, I really appreciate you for sparing your valuable time from your busy schedule. Our viewers were enlightened with what is social studies and what do we learn in social studies. Creative thinking in social studies, creative thinking in geography as well as in history. How social studies is a subject that has lot of movements like the sciences. How critical thinking links with 21st century skills. After gaining this knowledge, our viewers are enlightened with the topic critical thinking in social studies. Thank you, ma'am, once again. At the same time, I would also like to thank our little ones, that is our students who are connected with us. Really, you are great students. Really, you are great. Thank you. Over to you, Sonal. Let us be grateful to people who make us happy, imparts knowledge. They are the charming gardeners who make our soul blossom. So, I, Sonal Khabia, on behalf of Acharya Shri Vijay Vallabh School, deem it with a great honor to propose a hearty vote of thanks. My heart fills with lots of gratitude to thank our today's speaker, Ms. Kalpita Kshirsagar ma'am, for enlightening and enriching us with enormous knowledge and her valuable presence. A heartfelt thanks to our chairman, Sri Subhashji Parmar sir, committee members, trust members, principals, teachers, parents, and dear students for their enormous support. A special thanks to our technical team for their unflinching support and coordination to make this webinar a grand success. Thank you all enthusiastic and encouraging viewers for joining us to Facebook Live and appreciating us by your valuable comments. Thank you all and stay tuned with Acharya Shri Vijay Vallabh School for more such fascinating and knowledgeable webinars. Thank you. Acharya Shri Vijay Vallabh School, Pune, India. Thanks all our viewers for giving their overwhelming response. Thanks to our today's eminent speaker. A special thanks to our chairman, Shri Subhashji Parmar. A big thanks to our organizing team, Mrs. Snehal Khataukar, Principal, Mr. Kalpesh Darji, Team Leader, Mrs. Jyoti Sitapure, Teacher, Mrs. Sonal Khabia, Teacher, Mrs. Itisha Shah, Teacher, Miss Bhavika Rathod, Teacher, Miss Urvisha Rathod, Teacher, Mrs. Aparna Dhaigude, Team Member. Once again, thank you all. Thank you all the viewers for watching this webinar. We look forward seeing you next Sunday for yet another interesting webinar. Till then, stay tuned. Thank you.